big welcome to all of you. I hope all of you are doing really well. Let's start today's chapter, The Adventures of Tintin. Tintin actually में एक आपका कॉमिक कैरेक्टर है, ओके? आई एम श्योर आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, तो यहाँ पे हम टिंटिन के एडवेंचर्स के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में, ओके? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Complete the names of given cartoon characters. Values learned. Tintin is a famous comic character. In this lesson, the author tells about the origin of Tintin and Snowy of their adventurous jobs done by them. So, Tintin जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही फेमस कॉमिक कैरेक्टर है. इस चैप्टर में, इस लेसन में ऑथर बता रहा है कि कहाँ से, किस तरह से ओरिजिन हुआ था टिंटिन एंड स्नोई का और उनके एडवेंचरस जॉब्स का. ओके. The adventures of Tintin continues to interest and fascinate his fans many decades after this irrepressible comic hero first appeared in print on January 10, 1929. The creation of the Belgian author Herg, whose real name was Georges Prosper Remy, Tintin is one of the most recognized and best-loved fictional characters and perhaps Belgium's most famous icon. So Tintin आपका जो एक बेल्जियन का बहुत ही फेमस आइकन है और इसको क्रिएट करने वाले बेल्जियन के एक ऑथर थे जिनका रियल नाम था जॉर्ज प्रॉस्पर रेमी. Although essentially a comic strip character, Herg knew the importance of accurate research and took care to place Tintin in a real and believable world. Clippings from magazines, visits to museums, consultation with experts all contributed to the successful shaping of his lovable character. So, Herg जो थे उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने इस कैरेक्टर को शेप किया तो उसके लिए ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसे ही क्रिएट कर दिया होगा. उन्होंने क्लिपिंग्स जो मैगजीन्स की ली, म्यूजियम्स विजिट किए, एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट किया, ओके? इसके बाद ही सक्सेसफुल शेपिंग हो पाई टिंटिन कैरेक्टर की. An adolescent with no known family, this endearing character is a journalist, an adventurer, and a detective, all rolled into one. The round-faced, dotty-eyed reporter has only one distinctive feature, the celebrated coif. The Brussels newspaper, Lee Weinstein Cecil, introduced Tintin in comic supplement and he hasn't looked back since. Okay, so ये जो कैरेक्टर है, एडोलेसेंट है जिसकी कोई फैमिली नहीं है, ओके? ये जर्नलिस्ट है, एडवेंचरर है और साथ ही साथ डिटेक्टिव भी है. The intrepid ageless reporter has an uncanny knack of surfacing at just the right moment in international crisis, along with the supporting cast led by his faithful dog Snowy, Captain Haddock, and the eccentric Professor Calculus. Tintin battles good-for-nothing of all stripes, spies, drag runners, mad scientists, and Latin American guerrillas. Okay, so Tintin अकेला नहीं है, उसकी एक टीम आप कह सकते हैं जिसमें है उसका डॉग, बहुत ही फेथफुल स्नोई, कैप्टन हैडॉग है, और एक बहुत ही अजीबोगरीब प्रोफेसर है, कैलकुलस. ओके. The boy reporter's first adventure was Tintin in the land of the Soviets, and he exposed the Soviets' propaganda and put the communities in their place. From this debut, he went on to be present at the Japanese invasion of China in the 1930s to get embroiled in an oil crisis in the Middle East. Before tracking to the capital of crime, Chicago, he was in Belgian Congo in Africa. He even went on a voyage to the moon 15 years before Neil Armstrong landed on the moon aboard Apollo. It is a familiar sight in these comic strips to see Tintin grabbing his coat to chase another adventure with his trusted Snowy in town. From villainous drug smugglers at sea to expeditions to the North Pole and searching for sunken treasures in the Caribbean, Tintin and his gang have escaped the jaws of death many times. Okay. So ये काफ़ी familiar sight है जो आप comic stripe पे देख सकते हैं कि Tintin अपना कोट को ग्रैब कर रहा है दूसरे एडवेंचर को चेस करने के लिए अपने ट्रस्टेड डॉग स्नोई के साथ. ओके. सो इन्होंने देखिए बहुत ही एडवेंचरस काम किए हैं. विलेनियस ड्रग स्मगलर्स हों, आपके समुद्र से लेके नॉर्थ पोल में एक्सपीडिशन किया है, संकन ट्रेजर्स जो आपके कैरेबियन में उनको सर्च किया है. ओके. और टिंटिन और उसकी गैंग जो है कई बार मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं. Courageous, ingenious, modest and practical, Tintin never hesitates to confront the forces of evil and protect the weak. The breathless career of this young journalist with his cowlick hair has taken him all over the world in 23 of his comic adventures. With his exploits, the dashing reporter conquered the hearts of readers of comics and generated a legion of Tintin fans across the world. So across the world इस कॉमिक के बहुत ही लोग दीवाने हैं. ये जो कैरेक्टर है टिंटिन, इसके काफ़ी दीवाने लोग हैं. The Tintin books have been translated into more than 60 languages. The last adventure was left unfinished on Herg's death in 1983.
This favorite hero hasn't chased any new adventure after demise of his creator, but Tintin lives on in an endless stream of Tintin t-shirts, watches and mugs. Okay, so Tintin की बुक जो है वो आपके more than 60 languages में translate हो चुकी हैं, और जो last जो adventure था actually वो unfinished रहा, incomplete रहा, क्योंकि जो क्रिएटर थे हर्स उनकी डेथ हो गई थी 1983 में. ओके, लेकिन टिंटिन जो है आज भी जिंदा है. ओके, आप देख सकते हैं, मतलब टिंटिन आपको टी शर्ट्स में, वॉचेस, मग्स में वो कैरेक्टर आपको ज़रूर मिलेगा. ओके, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ऑल्दो टिंटिन्स लास्ट कंप्लीटेड एडवेंचर अपीयर्ड इन 1976, ही इज मोर अलाइव टुडे देन एवर बिफोर. A silver 10 euro coin depicting Tintin and Snowy was minted especially for the 75th anniversary in 2004 in honor of this endearing comic character. The American director Steven Spielberg made the animated film The Adventures of Tintin in 2011, which became a hit across the world. Okay. 75th एनिवर्सरी जो 2004 में थी, तो एक सिल्वर कॉइन 10 यूरो कॉइन मिंट किया गया जिसमें टिंटिन और स्नोई की पिक्चर थी. ओके, इसके अलावा अमेरिका के डायरेक्टर है स्टीवन स्पील्सबर्ग, उन्होंने एक एनिमेटेड फिल्म बनाई थी जिसका नाम था द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन इन 2011, जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ही हिट रही थी. ओके, moral learned. What moral did you learn by this lesson? Write in your own words. Let's practice comprehension. Multiple choice questions, MCQ. A. Tick the correct option. Number 1. Tintin is a cartoon character. B. Actress. C. Actor. Or D. Writer. And the answer is A. Cartoon character. B. Complete the given sentences. Number 1. Tintin can be described as dash, dash, dash and dash. Okay. So इन 4 words में Tintin को हम describe कर सकते हैं जो आपके chapter में given है. Okay. So go through the chapter again and find out all these 4 words in which Tintin can be described. Okay. See, complete the table of dates and events. Okay. So यहाँ पे देखिए आपको dates दिए गए हैं. Okay. और आपको ये complete करना है कि इस date पे कौन सा event हुआ था. Right. D. Answer the given questions. So you have to answer all these questions. Now play with words. Affixes. An affix is a letter or group of letters which is added to either the beginning or the end of a word to form a different word with a slightly different meaning. An affix can be a prefix or a suffix. देखिए affix आपका prefix भी हो सकता है और suffix भी हो सकता है, यानी word के beginning या end में हम इसे लगा सकते हैं. Okay? A prefix is an element placed at the beginning of a word to slightly change its meaning. For example, non-existence, ex-president, re-elect, illegal, impatient. A suffix is an element placed at the end of a word to form another word. Nation, national. Okay, suffocate, suffocation. So prefixes and suffixes play an important part in word formation. Prefixes. Study how new words are formed from related words. Unfinished is the opposite of finished, formed by adding the prefix un. Irrepressible is something that cannot be repressed or controlled. Intrepid means fearless, brave, from trepidation, feeling of fear. Embroil means involved in a broil or trouble. Prefixes such as n, over, etc. can be used to form verbs. Enable, empower, overcome. A. Take the words that contain affixes, cross the ones that don't have any. So first one is important. क्या important में कोई affix है? No. So you will cross it out. इसी तरह से impartial, क्या इसमें affix है? Yes. Im. Okay. So आप इसे क्या करेंगे? Tick करेंगे. B. Write the opposites of the following words using suitable prefixes from the box. तो box में आपको prefixes दिए गए हैं और आपको इनको words given है उनके opposite लिखना है. Okay. So first one is social. इसका opposite होगा anti-social. Okay. C. Form new words by adding the suffix a-n-c-ens or e-n-c-ens as appropriate. So first one is eminent. So you will write here eminence. Okay. Grammar workshop. A. Read the passage carefully and complete the sentences that follow by choosing the most appropriate option from those given below. Okay, so a passage is given over here, students. You should go through this passage and then उसके बाद आप जो भी appropriate options होंगे जो आपके पास given है उनमें से choose करेंगे. Okay, so go through this passage. Okay. B. Complete the following paragraph about the origin of the name of the city Bengaluru in Karnataka. Use the correct form of the words given in brackets. You may use the active or passive form of the verbs. The name Karnataka dash derived from Karunadu, which literally dash mean lofty land. So the name Karnataka is derived from Karunadu, which literally means S लगा देंगे lofty ने. Okay, so इसी तरह से आपके पास देखिए अपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स का यूज़ करना है जो ब्रैकेट्स में गिवन है एंड देन कंप्लीट करना है पैराग्राफ को. ओके,
C. Rewrite the following sentences in the passive voice. Number 1. James has ordered a pan pizza. So इसे passive में हम कैसे change करेंगे? A pan pizza has been ordered by James. Okay. So similarly आप बाकी sentences को passive voice में change करेंगे. Okay. So conversation. Practice this dialogue between Peter and David about their favorite comics. So यहाँ पे दो लोग हैं, Peter and David, और उनके बीच में conversation चल रहा है about their favorite comics. Okay. तो आपको ये जो dialogue है इनकी practice करनी है. Okay.